Hello and welcome. You're watching Newsbreak with me, Sanket Upadhyay. Now, after a student's suicide case from IIT Bombay, a student has allegedly died by suicide in IIT, Andhra Pradesh. This is a final year engineering student at Andhra Pradesh's institute. This is in Kadapa district. He also allegedly died by suicide. Now, this is a matter of 2 days and 2 deaths by suicide. Now, obviously, a lot is being spoken about on whether this was a case of harassment over reservation, or whether it was indeed harassment which caused these deaths by suicide, which had a caste angle. Now, is that the truth or not? Only investigation will tell, because there is still no clarity yet on what prompted the student in question to take this extreme step. But I'm joined now by Chandrasekhar Azad. He is the founder of the Bhim Army, to know how this is being perceived. चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, ये 2 हादसे हो गए हैं 2 दिन में, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? हादसे नहीं है संकेत जी, सोची समझी साजिश है। देश आजाद हो गया, लेकिन लोगों की सोच आजाद नहीं हुई है। वंचित तबके को आज भी गुलामी के आधार पर देखा जाता है। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं इस तरह के, उनमें 98% जो हैं उच्च जाति के टीचर्स हैं। ये पहला केस नहीं है। हम अगर याद करेंगे तो अनिल मीणा एम्स में उसके साथ ऐसा ही हुआ, बाल मुकुंद भारती के साथ हुआ, पायल ताड़वी के साथ हुआ, फातिमा लतीफ के साथ हुआ, और रोहित वेमुला, जिनको आज तक हम याद करते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हमने खो दिया, वो जातिवाद की भेंट चढ़ा इन्हीं संस्थानों में। 98% रिजर्वेशन है वहां। देखो हुआ क्या है ना, रिजर्वेशन के जरिए SC ST OBC के बच्चे चले तो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज स्कूल्स में रिजर्वेशन है, क्लास में बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जो कोटा है टीचर्स का, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो आपको याद होगा खड़गपुर ITI की एक मैम थी, सीमा जी, जिन्होंने ओपनली गाली दी बच्चों को कि कहां से चले आते हो। उनको लगता है, तथाकथित उच्च जातियों को, जिनकी मानसिकता दूसरी तक, ये बच्चे यहाँ क्यों आ गए, इंस्टीट्यूशन तो उनके लिए, इनको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इनकी क्या जरूरत है यहाँ। चंद्रशेखर जी, आपको लगता है कि क्योंकि देखिए जो आप बोल रहे हैं और अभी जिस तरीके से जांच हो रही है, जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, अब देखिए पवई पुलिस जो है उसने एक्सीडेंटल डेथ की एक रिपोर्ट पर जांच शुरू की है। पुलिस ये पता कराने की कोशिश कर रही है कि ये पढ़ाई का प्रेशर था या कोई और वजह थी, और उस पर जांच अभी जारी है। ये जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर के अभी जांच नहीं हो रही, तो आपको लगता है कि उसको जरा जांच के दायरे को बढ़ा करके इस दिशा में भी जांच करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मैं संकेत जी अपने व्यक्तिगत आपसे कुछ कह रहा हूं जी। मैं प्राइमरी स्कूल में था, ये तो IIT बॉम्बे की बात चल रही है, मतलब हायर इंस्टीट्यूशन है यहाँ के ये। तो मुझे हमारे टीचर ने कहा कि इस शेड्यूल कास्ट के बच्चे जाति का नाम लेके वो सिर्फ वजीफा लेने के लिए यहाँ आते हैं। आप देखिए, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, इतने बच्चों के सामने आपको अपमानित किया जाए, आपके ईगो को जो है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाए। हम वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ने के लिए, और वहां हमें मदद की जरूरत होती है। लेकिन जब हमें इस चश्मे से देख के बेइज्जत किया जाएगा, बाद में एक्सीडेंट ही होगा। जांच का दायरा बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सच है संकेत जी, 98% जो टीचर्स हैं इन सारे इंस्टीट्यूशन में, वो रिपोर्ट है वो उच्च जाति के, और बच्चे तो वहां SC ST OBC के भी। तो अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है, क्योंकि आरक्षण है, कोटा है वहां पे टीचर्स का, लेकिन लागू नहीं किया जाता, नोट फोर्स टेबल करके हटा दिया जाता। बहुत केस है मेरे पास ऐसे, बहुत टीचर आते हैं मेरे पास के साथ, देखिए एक वैकेंसी लेकिन फिर भी नहीं रख रहे। तो अगर इन इंस्टीट्यूशन में अगर ये हमारे कत्लगाह है, हमें जाके मरना है, वहां पढ़ने जाते, मरने नहीं जाते, तो इनको गिरा देना चाहिए। नहीं, इसीलिए चंद्रशेखर जी, इसीलिए मैं आपसे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो निश्चित रूप पे ऐसे हमने कई मामले पहले भी देखे हैं जहां भेदभाव जातिगत आधार पर हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में अभी तक जांच में ये बात निकल करके नहीं आई है, तो आपको लगता है कि जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए ताकि पता चले कि सही में ये मुद्दा था या नहीं था, या फिर जैसे कि अभी शुरुआत में एक्सीडेंटल डेथ में ये जांच की जा रही है कि वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से था, वो जातीय एंगल अभी नहीं आया है। ठीक है, मैं इस बात को आपकी सुनता हूं और मानता हूं कि जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं आपके कुछ याद दिलाता हूं। मैं भी रोहित वेमुला की शहादत दिवस पे गया था उनके इंस्टीट्यूशन में हैदराबाद।
आज तक वो जांच नहीं आगे बढ़ी है। संकेत जी, इतना बड़ा इशू था, देश की जो अन्य पार्टी है उनके राष्ट्रीय लीडर वहां गए, लेकिन आज तक वो जांच आगे नहीं बढ़ी है। उनमें से एक व्यक्ति भी जो है कोई कन्विक्ट नहीं हुआ। ये हमारे सामने और बड़े बड़े लोगों के नाम, कौन सी जांच कराएंगे और कौन करेगा तो जांच? आपका आरोप ये है कि ये जातिगत इस तरीके के मामले जो हैं उनको दबा दिया जाता है या उस पर जांच आगे नहीं ले जाई जाती? देखिए, जब बात वंचित तबकों की होती है तो कलम बड़ी धीरे से चलती है। ये न्यायपालिका का भी हाल है। जब हम 10% रिजर्वेशन पर बात करते हैं डब्ल्यूएस पे, तो उस पर तत्काल फैसला आता है और हमारी प्रमोशन रिजर्वेशन की फाइल पड़ी रहती है। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, सबको मौका मिले। लेकिन ये जो है, ये जो कत्लगाह बन गया है ना बहुजनों के, SC ST OBC के, ये इंस्टीट्यूशन गिरा देने चाहिए। अगर हमारे बच्चे वहां मरेंगे, मरने नहीं जा रहे हम वहां पढ़ने जाते हैं। ये पीड़ा है हमारी। जो बच्चे पढ़े लिखे आज पढ़ रहे हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, क्या करें? कौन कोई पुलिस सुनती नहीं है। हाथरस में अभी तक न्याय नहीं हुआ। कास्ट एट्रोसिटी के हाल ये है देश में, और वो सरकार है जो न्यायपालिका की बड़ी बड़ी दुहाई देती है। जी ना अभी आपको याद होगा ना, या संकेत जी, राजस्थान में जो हुआ पानी का मटका छूने पे, और सब लोगों ने कहा कि नहीं ये कास्ट एंगल नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ, जांच में क्या आया कि नहीं एंगल था। I think you make an important point that at least the ambit of the investigation must be increased and it must not be ruled out. Basically, you cannot rule out anything right now. Everything is a possibility. Thank you very much, Chandrasekhar Azad, for joining us. Chandrasekhar Azad, the founder of the Bhim Army, says that increase the ambit of the investigation. Arpita Datta is the national convener of NSUI. Seher is a student activist from Mumbai. And Professor Badri Narayan is an expert on Dalit issues. Thank you very much. Arpita, I want to begin with you first, Ms. Arpita Datta. How would you respond to these allegations that there is a definite and clear caste angle? You just heard Chandrasekhar Azad, who feels that the investigation, the ambit of the investigation has to be increased. Right now, the investigation revolves around whether this was a death by suicide because of the pressure of the studies. Absolutely, I agree when you say that the ambit of the investigation needs to increase. Yes, pressure due to studies can be a reason why the suicide has happened. We have seen suicide cases come up time and again in premier institutions of India. And what another point alongside the whole caste angle that I'd like to bring up here is with regards to mental health. How much access to mental health care are these institutes in India are being able to provide to our students? How much accessibility they have in terms of representation as well? If it was a boy from a community of the scheduled caste who came under pressure, did he have the required people? Did he have people in the institution who could provide him counseling in terms of representation as well? Did we have scheduled caste counselors sitting there to provide that necessary support, that guidance to this young boy? And of course, the ambit needs to increase because this does not seem like just an accidental death. It also seems like an institutional murder. We cannot disregard the reality of India that is happening time and again. And we know how, as a student myself from Delhi University, we do understand that college spaces, they can be really not inclusive and they can be unsafe for people. Alleged bias on the basis of not just religion but caste discrimination is a reality. Nobody can deny that. It's a reality. But whether this case is, perhaps a reflection of that reality or not is something which needs investigation. Seher, I would like you to come in here. How would you respond? Do you feel that it is only fair to expect a detailed investigation to then rule out the caste discrimination angle? I mean, unless you don't investigate, how can you jump to a conclusion that no, there was no caste angle involved? Absolutely, it is very important to investigate, and even the boy who committed suicide didn't write a note, so it's a lot more work for the investigators to figure out how he was feeling. But I want to address a fact. This is my personal opinion, that even with the country moving forward in terms of technology, modernization, infrastructure, we are still very close-minded as people. We are back-minded when it comes to treating people, setting standards. Definitely the people who bullied him, harassed him, after studying in IIT, that means that all of them come from educated backgrounds, are doing this. So just imagine how messed up our foundational mindset towards the underprivileged
can be, and the scheduled caste can be. First of all, this is a question that I have, that why do we even have the term scheduled caste? Do we hear this while joining a university in London or America? Is there a different category for different people? This takes us 100 steps behind when we categorize people as per their background and not for their capabilities and abilities. But you know, Seher, you raised a point about international universities. You see, in a London or in an America, you don't have the sort of this complex caste discrimination, which has manifested itself for over 1,000 years plus. Yes. So that's the reason why. I mean, the champions of those people. See, it's very easy to say that discrimination must not exist or categorization must not be there. But we are the ones who are discriminating. Why do we have this category? What is the need of a scheduled caste category? Isn't all to get them to the same level? I mean, I see one more. Professor Badri Narayan. I'm sure he was so capable. Seher raises, so capable that he got into a point an which IIT university. It's very difficult for a person like me to get into that university. One more. Professor Badri Narayan, you see, Seher raises a point which many youngsters tend to speak about. That why is the need of this separate categorization? Why us versus them? But don't you feel the reason why this us versus them existed in the first place is because you had to balance out the indifference that existed for many, many thousand years. And that is why the need exists to have this difference. Sanket, you are right that this is the categorization or difference. It is created by our society. And it is in one way, it became a need because of protective discrimination and policies and returning back to the sufferers. But I think after certain time, slowly we need to demolish all these boundaries, but categories. But it will take some time. It's not today one can imagine for it. No, but then Professor Narayan, with such cases coming to the fore, where you have APPSC of IIT Bombay also writing these tweets on how many Darshans and Anikets need to die, institutional murder of Darshan Solanki. These are, what do we celebrate? What do we and what do we do? We feel marginalized. In a situation like this, clearly this sentiment exists that people are being discriminated against. And which is why I come back to the main parent point, that unless you investigate, keep like an open mind in the investigation process, on realizing whether there was a caste angle involved here or not, we will never know. Till then we'll be divided in a very polarized way on whether this was a caste-related suicide, harassment or not. You are very right, Sanket. Actually, we used to tell in research that whatever question you are going to raise, you will get the answer for that only. So we need to raise other questions also, and we need to extend the ambit of the investigation. Yeah. But it's also a fact that in this kind of institution there are a lot of pressures on the students, and this SC this suffering through caste discrimination is also a kind of pressure in this kind of elite institutions, and where no one wants to be discriminated. And there, this kind of pain gives a much of a kind of harm a lot to the psyche of your mental health of the boys. Maybe in the villages, maybe in the rural colleges, they can be a resilience among marginals. But in this kind of institutions, they create a condition in which a small kind of difference also, a small kind of discrimination also gives a lot of pain. Okay. So the overburden, but this new education policy is quite sensitive towards it, and they are talking about how to make a campus which may be a discrimination-free campus, and also creating a course which can give them solace, a kind of linking science with poetry, science with music. So different kind of devices they have proposed in new education policy. Correct. Let's see what happens. All right. Professor Narayan, Seher as well as Arpita Datta, many thanks for joining us.